Hello everyone. Today we are going to discuss the proof of the Stokes theorem. Statement is if f is any continuously differentiable vector point function and S is a surface bounded by a curve C, then the line integral f dot dr will be equals to the surface integral curl of f dot n ds, where n cap is the unit normal vector drawn at any point of the surface S in the direction in which the right-handed screw would move when rotated in the sense of the description of C. जैसे कि हम कर्व की डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में अगर हम अपनी राइट हैंड स्क्रू को रोटेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारी जो थंब है पॉइंट करेगा, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर. Now here we consider coordinate system, and let's suppose this be x-axis, this be y-axis, and this is z-axis here, and this point is origin here. So let us consider the surface. Let's suppose this is a given surface S here, and the curve C is here, and we draw a projection of this surface in the xy plane, where R is the region of this surface and C1 be the boundary of this curve in the projection. Now see its proof. Let S be a surface which is such that its projection on xy, yz and zx planes are regions bounded by simple closed curves, and suppose that the equation of the surface can be written as z is equals to f of x y, या फिर x की वैल्यू लिख सकते हैं हम फंक्शन ऑफ वाई जेड, या फिर हम y की वैल्यू लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स जेड, जिसमें f, g और h जो है वो सिंगल वैल्यूड है, कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस. ठीक है, देखो अगर हमें पता है ये लिखने का रीज़न क्या है, इसमें हमें पता है कि कोई भी, देखो हम कोई सरफेस लेते हैं, ठीक है, सरफेस ले रहे हैं हम, या तो मतलब जो सरफेस है वो 3D में ले रहे हैं, मतलब वो प्लेन टाइप्स हो गया, मान लो उसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी. तो इसमें अगर तो हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दैट विल बी डी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी. तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि z जो है वो x और y का फंक्शन हो गया, तो ये लिख दिया हमने. ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन जो है वो कंसीडर करते हैं, और ये वाली इक्वेशन हमने कब लेनी है कि अगर हम xy प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं. एंड सिमिलरली x की वैल्यू हमारे पास फाइंड करेंगे तो फंक्शन ऑफ जी वाई हो जाएगी. इस तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करें. Now, हमने इसमें प्रूव क्या करना है, we are to prove that the line integral f dot dr is equals to the surface integral curl of f dot n ds. Call this as equation number 1. So let us suppose that the function f can be written as f1 I cap in the component form f2 j cap plus f3 k cap, and r vector is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap. Then after differentiating, we are having dr is equals to dx I cap, dy j cap, dz k cap. Then the line integral f dot dr will be equals to the line integral f1 dx plus f2 dy
plus f3 in z. In the right hand side, that will be curl of f dot n ds will be equals to the surface integral. कर्ल का मीनिंग क्या होता है कि हमने डेल का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. एफ डॉट एन की वैल्यू एफ की वैल्यू शुरू कर देते हैं. एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप डॉट विद एन डी एस. ये हमने दोनों की वैल्यूज लिख दी. अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम देखो यहाँ पे ना हमें पहले डेल का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर डेल का f2 के साथ, देन डेल का f3 के साथ. तो पहले हम सिर्फ इसका f1 के साथ लेंगे और जो इसका आंसर आएगा वही आंसर सिमिलरली डाल के f2 के साथ आएगा, f3 के साथ आएगा, वो लिख देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द सरफेस इंटेग्रल डेल क्रॉस f1 आई कैप डॉट एन डी एस. इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे डेल क्रॉस f1 आई कैप. इसकी वैल्यू हमारे पास होएगी आई कैप, जे कैप, के कैप. यहाँ पे है कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, f1 0 0. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी कर्ल f1 बाय कर्ल जेड जे कैप माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल वाई के कैप. ठीक है. तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है. तो इस नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं. सो इट विल बी इक्वल्स टू द सरफेस इंटेग्रल कर्ल f1 बाय कर्ल z j कैप माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y into k cap dot with n ds. So it will be equals to the surface integral कर्ल f1 बाय कर्ल z n cap डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो j डॉट n को हम लिख सकते हैं n cap डॉट j cap माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल y n cap dot with k cap into ds. Call this as equation number 2. Now let us suppose that P be any point. Let P be a point on S and ds be the elementary area enclosing the point P. Let n cap be the unit vector along the normal to ds at P. Then देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया. लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया इस सरफेस में और P पॉइंट का मैंने एनक्लोजिंग एरिया एलिमेंट ले लिया से ds here. तो इसकी जो मेरे पास ये प्रोजेक्शन आएगी, जो इसकी प्रोजेक्शन मिल रही है यहाँ पे, इसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ds है. ठीक है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्शंस. सो वी आर हैविंग ds is equals to dx dy upon n cap dot with k cap. Call this as equation number 3. और n cap क्या है, इसके जो परपेंडिकुलर हमारे पास यूनिट वेक्टर इट इज n cap here. Where dx dy is the projection of ds on the xy plane. हमारे पास जो सरफेस एलिमेंट बना है, एरिया एलिमेंट, लेट्स सपोज दिस इज dx हियर एंड दिस इज dy. इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आएगी dx dy. एंड लेट c1 be its boundary. Now choosing z is equals to function of xy as the equation of surface S. The position vector of point P can be written as r vector की वैल्यू हमारे पास हुई xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. If we consider z is equals to function of xy, so it will become xi cap yj cap plus f of xy k cap. Now after differentiating with respect to y,
सो वी आर हैविंग एक्स इंडिपेंडेंट है, उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई 0 आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कर्ल जेड बाय कर्ल वाई के कैप, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जे कैप प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल वाई के। नाउ सिंस कर्ल r by curl y is a tangent vector at the point P, so this implies that कर्ल r by कर्ल y जो है वो यूनिट वेक्टर के क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा, इज परपेंडिकुलर टू द एन कैप। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होएगा, जीरो होएगा, so दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इनकी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो एन कैप डॉट कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, सो वी गेट जे कैप प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई के कैप इज इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इट विल बी एन कैप डॉट जे कैप प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई एन डॉट के कैप इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ से हम एन डॉट जे कैप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो वी आर हैविंग एन कैप डॉट जे कैप, so we are having n cap dot j cap is equals to minus of curl z by curl y n dot cap dot k cap. Call this as equation number 4. Now we put this value in equation number 2. Then we have the surface integral del cross f1 I cap dot n cap ds will be equals to the surface integral, it will be equals to minus of curl f1 by curl z by curl y n cap dot k cap minus curl f1 by curl y n cap dot k cap into ds. Now this will be equals to the surface integral curl f1 by curl y plus curl f1 by curl z by curl y n cap dot k cap ds. Call this equation as equation number 5. Now on the surface S f1 xyz की वैल्यू हमारे पास क्या है, f1 xy, और z को हमने फंक्शन लिखा है x और y, ठीक है। देखो हमारे पास ये एक फंक्शन है xy और फंक्शन ऑफ xy, मतलब बेसिकली इक्वेशन हमारे पास xy की टर्म्स में ही है। कॉल दिस एज न्यू फंक्शन ऑफ xy. So this implies that f of xy की वैल्यू हमारे पास f1 of xyz के इक्वल। Now we differentiate this with respect to y. So we are having curl f1 by curl x into curl x by curl y plus curl f1 by curl y by curl y by using the chain rule. We are having this equation. So after substituting its values, जैसे हमारे पास z का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो y है वो क्या होएगा, जीरो होएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो कर्ल f by कर्ल y की वैल्यू आएगी हमारे पास कर्ल f1 by कर्ल y, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस कर्ल f1 by कर्ल z डॉट कर्ल z by कर्ल y. Please call this as equation number 4. So put this value now put this value in equation number 5. In the previous we have solved the equation number up to equation number 6. Now put this value in equation number 5. Then we have surface integral del cross f1 I cap dot n ds will be equals to the region R integral minus curl f by curl y n cap dot k cap ds.
Now from equation number 3 we have n cap dot k cap ds is equals to dx dy. So यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So we are having the surface integral del cross f1 I cap dot n ds is equals to the region integral minus curl f by curl y into dx dy. Call this as equation number 7. Now we use the Green's theorem. By Green's theorem, in the plane region R, we have the line integral c1 f dx plus 0 dy. If we consider this thing, this will be equals to the region integral कर्ल 0. ये हमारे पास रिसेम्बलेंस होगी ना m dx plus n dy के साथ. इसकी वैल्यू क्या होगी? कर्ल n by कर्ल x minus कर्ल n by कर्ल y into dx dy. So after solving we get region integral minus curl f by curl y into dx dy. Call this as equation number 8. Now put this value in equation number 7. देखो राइट हैंड साइड इनकी सेम है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी आर हैविंग द सरफेस इंटीग्रल del cross f1 I cap dot n ds is equals to the line integral f dx. Call this as equation number 9. Now since at each point xy of C1, the value of the function f is the same as the value of f1 at each point xyz of C. And since dx is the same for both the curves, so we have the line integral f dx is equals to the f1 dx. Equation number 10. Now see this thing, हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हम xy को पॉइंट लेते हैं c1 के ऊपर तो उसमें जो f है हमारे पास वो सेम होएगा जो हमारे पास f1 की वैल्यू है. ठीक है, at each point x y z of C. Now see the diagram here. अगर यहाँ पे मान लो मैंने कोई C1 कर्व के ऊपर पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो ये मेरे पास एक्स वाई पॉइंट है. अगर इसी पॉइंट को मैं, ये मेरे पास क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, अगर मैं इसी पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगी स्पेस में एक्स वाई जेड में, तो इसमें हमारे पास इससे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? एक्स वाई जेड आएंगे. जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई के यहाँ पे थे वही तो यहाँ पे आएंगे. वेरिएशन कहाँ पे हुई है? सिर्फ जेड की वैल्यू हमें असाइन की है. तो अगर एक्स वाई की वैल्यू सेम है तो फंक्शन की वैल्यूज भी क्या होंगी? सेम होंगी. ठीक है. मोर ओवर क्योंकि x की वैल्यू सेम है तो dx भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. सो दैट्स व्हाई dx की वैल्यू जो है वो सेम होएगी. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 9. इक्वेशन नंबर 9 में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस f1 I कैप डॉट n ds, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास लाइन इंटीग्रल f1 dx के इक्वल. कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 11. अगर हम एक्स वाई प्लेन में कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो हमने वो सॉल्व कर लिया उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व करना था. सिमिलरली डाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस f2 j कैप डॉट n ds की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? लाइन इंटीग्रल f2 dy. इक्वेशन नंबर 12. अगर वाई जेड प्लेन में हम प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं. एंड सिमिलरली सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस f3 k कैप डॉट n ds, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? लाइन इंटीग्रल f3 dz. इक्वेशन नंबर 13. अगर हम zx प्लेन में कंसीडर करते हैं, नाउ वी ऐड द इक्वेशंस 11, 12 एंड
30. Then what we get? The surface integral del cross f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap dot n ds is equals to the line integral f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. Okay. So this implies that the surface integral curl of f dot n ds is equals to the line integral f dot dl. So hence the Stokes theorem is proved here. Thank you so much.